are going to show you an experiment about acid-base identifier. Acid-base identifier. Yes, How will sir. you identify acid and base? With the help of this experiment. Okay, let me know. Okay, so here we have first glass and then we add water in it. What is this in the? Water. Okay, water. Okay, sir. And then we add turmeric powder. This is turmeric powder. Yes, sir. Okay. So turmeric is the indicator. And then we put. What is this? So this is a detergent powder. Detergent powder. Yes, sir. Okay. So now we are able to see that the color of water has been changed because of turmeric. Yeah. So detergent is base and its nature is basic. So when we will add it in it, it will change its color in dark red. Okay. And if we want to get the color yellow back, we have to add an acidic solution, just like lemon and vinegar. And what is this? Chandrayaan 3. What is this? Tell me something about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 launched by India on 14 July 2023 and landed on the moon 23 August 2023 on the south pole of moon. India is the first country who was successful in landed Chandrayaan 3 on the south pole of moon. Okay. How it works? Let me know. It will go up. Very good. Wonderful. Very good. 3. Okay. Tell me something about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 launched by India 14 July 2023 and landed on moon 23 August 2023. Chandrayaan 3 is the south pole, land on south pole is the moon. Okay. You yourself made this? Yes. Show me how does it work. Show me. Very, very nice. Good. Electromagnet. How does it work? Sir, it works on electricity. So there is copper wire on Yeah. Yeah. the And bolt. this is okay. Sir, this, Okay. Then Yeah. how does it work? sir, when current flow from copper wire, Yeah. there is a Let me show. This is very good. Good. It works as a magnet. yes. Very good. Good. इसमें इसके अंदर वाटर मिलाने से ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सर, हाँ, हाँ। तब ये गैस प्रोड्यूस करेगा ठीक है. और फिर इसमें जो Very good. Good. Water harvester. क्या होता है water harvester? So that is used for collecting water from roof and streets. Okay. By collecting water from roof and streets. Okay. When rain comes and you will collect the water and use later. Okay. Show me how it works. See. The water is collected in this and this is going in this. Very good. How does it work? सर ये इट इज़ यूज इन समब्रीन. ये समब्रीन में यूज़ किया जाता है. कैसे यूज किया जाता है इसको? यूज करके दिखाओ. सर ऐसे सर अगर हम यहाँ से इस नीचे से देख रहे हैं तो सर ये इसके सामने दिखाई दे रहा है. अच्छा.
बिल्कुल इस हाइट में दिखाई देता है। वेरी गुड, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ओह ओके, लाइक दिस as we usually uses it in parties. Okay, oh, very good, so nice. Reflection of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपने क्या इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता चलेगा अभी कैसे Yes, होता है, दिखाइए। सर ये अभी दो बिल्कुल सिंपल पेंसिल है, हाँ हाँ, जैसे मैंने पानी में डाली ये थोड़ी मोटी दिखाई दे रही है। अच्छा, तो क्या कारण है इसका, क्यों दिखाई देती है ये मोटी? शाबाश। ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्यों हो रहा है ये रिफ्रैक्शन? लाइट की वजह से। लाइट की वजह से। क्यों? लाइट जो तो एक बार चेंज, फिर इसमें जाने के कांच में चेंज हुई, कांच से बाहर निकल के पानी में गई, फिर उसकी स्पीड चेंज होगी, इस करके ये बैंड होगी। हाँ बेटा, व्हाट इज दिस? How does the oil mix in the water? हाउ डज ऑयल मिक्स इन द वाटर? With the water. विद द वाटर। ओके, शो मी हाउ ऑयल मिक्सेस विद वाटर। Firstly, we fill glass with water. This is water. Okay. Okay. It does not mix with water. Yes, it does not mix as the oil is floating over the water. Okay. Then how will it mix with water? Then we add Dettol in it water. Then it mix with oil with water. This is Dettol. Now it is also floating on the sea. So some of the lighter part of the oil are float, and heavier part of the oil is. What does this Dettol what's in this? Soil profile. Okay. Tell me something about soil profile. So this is soil profile. Yeah. Soil is top covering of earth's surface, which is soil is used to grow crops and many other things. So soil has 5 layers. First and second is humus and topsoil. Humus will contain horizon A. Horizon A is the amount of minerals are very high. Okay, you prepare. Okay, this is glass, shampoo, Uno, Colgate. You bring here all the bathroom articles. Show me how it works. First, then put the water in glass. This is water. Okay. It. Toothpaste you are adding in it. Okay. Okay. It will come upward. Okay. Good. नमक डाल देंगे, यस सर। उसके बाद सर इसको मिक्स करना है। मिक्स करना है। उसके बाद सर ये पेंसिल में इसके अंदर डालनी है। पेंसिल इसमें डाल दें। उसके बाद सर ऊपर से बैंकरी लगानी है। जब सर नीचे से बबल्स बनेंगे इसके अंदर। ये बबल्स बनने शुरू हो गए सर इसके अंदर। इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है ये। ओके। और ये बेल लगाई आपने, ये जब इसमें टर्न करेगा तो बताया
कि साइंटिफिक अप्रोच का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस इज ओनली सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन ट्रुथ. साइंस is based on purely truth. There is nothing without truth. ट्रुथ के सिवाय उसमें कुछ भी नहीं. सारी बातें सच और झूठ की. और ये एक सब्जेक्ट है जो हमें ये सिखाता है कि क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य. ठीक है, तो इससे एक आपकी अप्रोच बढ़ जाती है, आपका एक नेचर बढ़ जाता है, जिससे आपको पहचान होने लगती है कि क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़